So by now हमको पता चल गया है कि there are certain common entries which will remain common for admission, retirement and death of a partner. So in today's session we will apply them in admission of a partner. Hello everyone and welcome back to the commerce element. Today we will go with the whole sum, the full sum of admission of a partner, wherein we will be preparing revaluation account, partners capital account, cash account and the balance sheet of the new firm. So let's see what type of question comes. You have a question which says that balance sheet of X and Y was sharing P&L in 3:2 ratio as on 31st March 24 is given to you. And you have the items like sundry creditors, bills payable, outstanding expenses and capital accounts of X and Y as a part of your liabilities. And as a part of your assets of the balance sheet, you have land and building, machines, stock, debtors and cash. And apart from balance sheet, you have certain adjustments also. It is said that Z was admitted for 1/4 share on following terms. Z to bring 120 as capital and 20,000 as his goodwill. Second one says that machine to be depreciated by 10% and building to be appreciated by 30,000. Third one says that stock was overvalued by 20,000. The fourth is create 5% provision on debtors. And the final one says that outstanding salary was 5,000. Based on this balance sheet and these adjustments, you are supposed to prepare revaluation account, capital account and balance sheet of the new firm. Now remember in previous session I told you that जब भी कभी आपको न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनानी हो, इवन इफ कैश अकाउंट बनाने का नहीं भी बोला, फिर भी हम कैश अकाउंट बनाएंगे. फिर भी हम क्यों बनाएंगे? By the end of the sum तो आपको पता चल जाएगा. So based on this, let's start making entries. I've got accounts ready for you. Now before you start making entry in any account, in any sum, any topic, make sure that you have written the titles of the account. जो भी आपने बनाया उसके titles, उसके heads लिखे. So first thing we will start with is we will take the capitals of the partners and will be shifting them to capital account. We know that if you are taking the capital from liability part, we will shift it cross enter करके on the credit part of partners capital. X is having 180 and Y is having 70 as his capital. So 180 and 70,000, these are their balances brought down. The second thing you will always do in all these sums, if you have prepared cash or bank account, you will pick cash or bank's balance and drop it in that account. बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड से ले रहे हो, सो कैश और बैंक में क्रॉस एंटर करोगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो यू हैव 10,000 रुपीज ऑफ कैश बैलेंस. सो कैश अकाउंट में 10,000, कैश में कैश की बैलेंस लिख रहे हैं, सो इट विल बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. So always make a system that you will shift capitals first and then if cash bank account बना रहे हो, cash या bank जिसकी भी balance दी है, the second thing. Third thing, always you will check out for if any piggy bank is there. As of this sum, we don't have any piggy bank on liabilities part. We don't have any piggy bank on asset part also. अगर होती तो वो हम cross enter करके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के एग्जिस्टिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते. फिलहाल वी डोंट हैव, सो वी आर स्किपिंग दैट थर्ड स्टेप. वंस पिगी बैंक होती और डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द एडजस्टमेंट एंट्रीज. द फर्स्ट एडजस्टमेंट सेज दैट Z टू ब्रिंग 120 एज हिज कैपिटल. अब 120 कैपिटल लेके फर्म में आएगा, सो फर्म में 1,20,000 कैश आएगी. सो कैश अकाउंट विल गेट डेबिटेड 1,20,000 and it will get debited to Z's capital. From debit of cash, it will get cross entered to Z's capital. 1,20,000 कहाँ से लेके आए? By cash account. Further, the same adjustment says that he will be bringing 20,000 as his goodwill also. Again, firm में 20,000 cash आएगा.
So again कैश आएगा तो कैश डेबिट होगा 20,000. इस बार कैश किससे आया? इस बार कैश गुडविल से आया. So you will simply write goodwill. Now this goodwill will be cross-entered among the existing partners in their sacrificing ratio. Now आपको खाली इतनी information दी है X and Y are having P&L ratio as 3:2 और कोई ratio और कोई extra information नहीं दी. You remember we did all the cases of new and sacrificing ratio. Out of all those cases, this is the first one. अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दी तो वी विल अज्यूम दैट उनका जो भी एग्जिस्टिंग रेशियो है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी रहेगा, वही उनका न्यू रेशियो भी रहेगा. एंड thus this goodwill of 20,000 will get cross entered among X and Y who are sacrificing partners in their sacrificing ratio, which will remain same 3:2. So here again you will have the particular as goodwill and 20,000 will get distributed among X and Y in 3:2's ratio. So 20,000 upon 3 plus 2, 5. 20,000 upon 5 it is 4,000. 4,000 into 3. X will get 12 and 4,000 into 2. Y 8,000. So like that 20 हमने यहाँ पे डेबिट किए, हम X और Y के कैपिटल अकाउंट में 12 and 8 क्रेडिट करेंगे. So 12,000 and 8,000. The next adjustment says that machine to be depreciated by 10%. Now remember that जिस भी एसेट जिस भी लायबिलिटी के रिलेटेड एडजस्टमेंट हो, पहले वो एसेट या वो लायबिलिटी को बैलेंस शीट में से पिक करो, न्यू बैलेंस शीट में ड्रॉप करो. वी विल पिक मशीन विथ 80,000. एसेट साइड से लिया था, हम मशीन को बैलेंस शीट में एसेट साइड ही ड्रॉप करेंगे. मशीन ऑफ 80,000. नाउ क्या बोला एडजस्टमेंट में, मशीन को आपको डेप्रीशिएट करना है बाय 10%. सो माइनस 10%, 80,000's 10%. Remove the last digit and it will be 10%. So 8,000 minus करो. Now in new firm, your 80's machine will be revalued with 72. मशीन जो आपका एसेट है उसकी वैल्यू में रिडक्शन हुआ, आपको लॉस हुआ. And we discussed in the previous session that your revaluation account is of nominal nature, जहां पे आप लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को डेबिट करोगे, इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट करोगे. वी लर्न दैट आल्सो अगर फर्म के साथ कोई भी बुरी बात हो रही है तो बुरी बात हम डेबिट करेंगे, फर्म के साथ कोई अच्छी बात हो रही है अच्छी बात हम क्रेडिट करेंगे. एज ऑफ दैट मशीन की वैल्यू रिड्यूस होना इज अ बुरी बात एंड thus बुरी बात विल बी डेबिटेड. So 8,000 किससे? To machine. And further the adjustment says that building to be appreciated by 30,000. Building के related adjustment आया, pick building from balance sheet and drop it in new balance sheet first. So asset side से building pick की थी, land and building. It was of 1 lakh rupees. So 1 lakh rupees की लैंड एंड बिल्डिंग. अब आपको क्या करना है, आपको उसकी वैल्यू 30,000 रुपीज से अप्रिशिएट करनी है, इंक्रीज करनी है. सो यू विल सिंपली ऐड एन इंक्रीज ऑफ 30,000 लाइक दिस. इन योर न्यू फर्म लैंड एंड बिल्डिंग विल बी वैल्यूड एट 130. बिल्डिंग नाम के एसेट की वैल्यू 30,000 से बढ़ गई, आपको गेन हुआ. गेन हुआ वो तो अच्छी बात है, एंड अच्छी बात विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. लाइक दैट कितना गेन हुआ? 30 का. किससे हुआ? बाय बिल्डिंग. देन द नेक्स्ट एडजस्टमेंट सेज स्टॉक वाज ओवरवैल्यूड बाय 20,000. स्टॉक के रिलेटेड एडजस्टमेंट आया. फर्स्ट ऑफ ऑल पिक स्टॉक एंड ड्रॉप इट इन द न्यू बैलेंस शीट. स्टॉक it is of 1 lakh. So 1 lakh pick किया, 1 lakh drop किया.
Now the adjustment say that stock जितना होना चाहिए था उससे 20,000 overvalued है. It is overvalued by 20,000. Your balance sheet is there to show the assets and liabilities at fair value, not at over or under value. तो बिकॉज ये 1 लाख में 20,000 ओवर वैल्यू करके शो किया है, आप 20,000 को उसमें से निकाल दो, रिड्यूस कर दो, एंड thus 80,000 is the normal value of your stock. So remember, if any asset is overvalued by so and so amount, then जो भी वैल्यू से वो overvalued हुआ है, that will get deducted from that assets value. स्टॉक की वैल्यू में 20,000 का डिक्रीज हुआ. स्टॉक की वैल्यू जो आपका एसेट है 20 से कम हो गई, मतलब आपको लॉस हुआ, बुरी बात हुई. एंड thus लॉसेस अकाउंट डेबिट के हिसाब से यू विल बी डेबिटिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट. कितना लॉस हुआ? 20 का लॉस हुआ. एंड thus रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 20,000. It is debited to which account? It is debited to stock account. Then the next adjustment says that create 5% provision on debtors. Debtors के related adjustment है, pick debtors and drop it in the balance sheet. So debtors, we have debtors of rupees 40,000. So pick it with 40 and drop it with 40. And adjustment is asking you to create 5% provision. So we will be deducting 5% provision from debtors value. 40,000 में से अगर लास्ट डिजिट डिडक्ट करोगे, निकाल दोगे, तो इट विल बी 10%. 4,000 is 10%, तो 10 का हाफ is 5, so 4,000 का हाफ 5% will be 2,000. and thus न्यू फर्म में आपके डेटर्स हो जाएंगे 38. डेटर्स जो एसेट था उसकी वैल्यू में 2000 का रिडक्शन हुआ, उसकी वैल्यू 2 से कम हो गई. एसेट की वैल्यू 2000 से रिड्यूस हुई, दैट इज आपको लॉस हुआ. लॉस हुआ वो बुरी बात है, एंड thus बुरी बात विल बी डेबिटेड. कितना लॉस हुआ? 2000 का. सो यू विल मेक अ एंट्री ऑफ 2000. किससे लॉस हुआ? बिकॉज आपने प्रोविजन ऑन डेटर्स मेंटेन किया. So your particulars will be provision on debtors. Even if you write only debtors, that is also fine. And the last adjustment says that outstanding salary was 5,000. आपके पास outstanding salary नाम की कोई liability नहीं, फिर भी adjustment बोल रहा है कि आपके पास outstanding salary 5,000 की है, मतलब आपको ये liability अब new balance sheet में create करनी है. So outstanding salary appear ही नहीं करी है, we will directly create that liability. Outstanding salary 5,000. अब तक outstanding salary नाम की कोई liability नहीं थी, अब अचानक से liability 5,000 से बढ़ गई. Liability बढ़ी, that is your loss. अब आपको 5,000 salary pay करनी पड़ेगी, वो तो बुरी बात है, वो तो लॉस वाली बात है. And thus 5,000 again will be debited to revaluation account. इस बार किसका? इस बार outstanding salary का. And like this you are done with all the adjustments given. Once you are done with all the adjustments, and अगर आपको बैलेंस शीट बनाने को बोला है तो चेक आउट दैट कोई अनटच्ड आइटम रह गई है क्या, जो आपने एडजस्टमेंट में पिक करके यहाँ पे ड्रॉप नहीं की. Those all items are untouched items. If ऐसी कोई आइटम रह गई है तो अभी सिंपली उसको पिक करो एंड सिंपली उसको बैलेंस शीट में ड्रॉप करो. Asset side we have touched all the items. So let's check liability side. Creditors अब तक इफेक्ट में आया ही नहीं. So simply creditors को liability में से पिक करो, drop them to liability. So you'll have sundry creditors over here and they were of 50. We will pick and drop them with 50 only. Then you have bills payable of 20. Simply pick them and drop them. You have bills payable 20,000. Then you had outstanding expenses of 10,000. Pick it, drop it. So outstanding expense 10,000.
So by now you have done all the adjustment and you have sorted out with all the items of your balance sheet as well. Once everything is done, then start closing accounts. We'll start closing accounts in the same sequence in which we have prepared. We have prepared first revaluation account, so we will close revaluation account first. How to close it? Check out that which side's total is more. जिस भी साइड का टोटल ज्यादा है उसे पहले टोटल करो. You have 20, 30 and 35 on debit side and you have 30 on credit side. So this side's total is more. So total it 35. 35 को सामने लेके जाओ. And अगर 30,000 minus करोगे तो you will have a gap of 5,000. Now this gap, if it is appearing on credit part, it denotes that it is having a debit balance. And debit balance we know is of loss. So आपने जो भी assets और liability को revalue किया उससे आपको 5,000 का loss आया. Before the new partner gets admitted to the firm, हम ये loss existing partners के existing ratio में distribute कर देंगे. So this will get cross entered by partners capital account. Existing partners were X and Y and their existing ratio was 3:2. So this 5,000 will get distributed in 3:2 among both of them. 5,000 upon 3 plus 2, 5. It is 1,000. 1,000 into 3. 3,000 will go to X and 1,000 into 2. 2,000 will go to Y, and like that this loss will be distributed and your revaluation account will get closed. From credit of revaluation account, the loss will get transferred to debit of partner's capital. So X will get 3,000, Y 2,000. कहाँ से लेके आए? You bought it from revaluation account. So your particulars also will be to revaluation. Now we will close partner's capital account. Partner's capital, generally they will have credit side's balance more. So you will total credit side first. It is 192 for X. Bring 192 on the other side. 192. 192 minus 3. It will be 189. This will be his balance carried down and X का capital account close हो जाएगा. Total for Y it is 78. Bring that 78 on the other side minus 2. So his balance will be 76 and Y's capital also will get closed. Z को close करो. 120. Bring it on another side. 120. He don't have anything right now, so his gap also will be 120. And like that, Z's capital account also will be closed. So these are the balances of X, Y and Z in the new firm. जैसे आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन लाइबिलिटी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट में से पिक किया था, सेम वे बैलेंस कैरी डाउन आप लाइबिलिटी पार्ट ऑफ न्यू बैलेंस शीट में ड्रॉप कर दोगे. सो हियर यू विल हैव पार्टनर्स कैपिटल X, Y and Z. X की 189 की बैलेंस है, so 1,89,000. Y is having a balance of 76. So in front of Y you will write 76 and Z is having 1,20,000 की balance. So in front of Z you will write 1,20,000. जो भी इन तीनों का टोटल है, place it in the outer column. You have 3 zeros. 9 plus 6, 15 is 5, carry 1. 9 plus 7, 16, 17, 18. 18 is 8, carry 1. It will be 3,85,000. Now we have cash account. We will close cash account as well. It will be 1,50,000. Bring it this side. 1,50,000. Credit cash कोई हुआ ही नहीं. So your gap also will be
1,50,000 and this will be cash ki balance carried down. And like that cash account will get closed. कैश अकाउंट जब बनाया हमने एसेट पार्ट में से उसकी बैलेंस ब्रॉट डाउन की थी. जब हम क्लोज करेंगे उसकी जो कैरी डाउन बैलेंस है अगेन हम वो एसेट पार्ट में ड्रॉप कर देंगे. सो कैश इज हैविंग अ बैलेंस ऑफ 150. नाउ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट अगर आपको कैश अकाउंट बनाने का नहीं भी बोला फिर भी हम बनाएंगे जब हमको नई बैलेंस शीट बनानी है. दिस इज द रीजन बिकॉज पुरानी बैलेंस शीट में तो कैश की वैल्यू 10,000 ही थी. But because of all the adjustments that took place during admission, वो 10,000 वाला cash balance end में 150 हो गया. So in new balance sheet you are supposed to show the balance with 150. And this is the reason every time we will be making cash account if we are supposed to make balance sheet even if we are not asked to. I hope this reason is clear to you. Now finally बची balance sheet उसको भी close करेंगे. Now balance sheets total it will be 3 zeros, then 5 plus 5 10, 10 0 carry 1, 8 plus 1 9, 9 plus 5 14, 15 16 17, 17 7 carry 1, 3 plus 1 4 and it is 4,70,000. This side also it must be 4,70,000. Because both the ends of balance sheet must always tally. So let's check out हो रहा है कि नहीं. You have 3 zeros, then 2 plus 8. It's 10 0 carry 1. 7 plus 1 8 plus 3 11 plus 8 19 plus 3 22 and 5 27 7 carry 2. 2 plus 1 3 plus 1 4. So it is 470. And like this the balance sheet is also closed. And finally we are done with the full sum. We prepared revaluation, capital, cash and balance sheet and balance sheet tally bhi ho gayi. But generally as a part of your board's question, the question will ask you to prepare simply revaluation account and partners capital account with some obvious working notes. So next session onwards, we will be focusing on preparing those two accounts only with some additional and new adjustment entries. So until the next session, stay tuned and goodbye.